Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class all about MEG 06. That's American literature, and the students have been waiting for this particular video for a long period of time. और डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जल्दी जल्दी डाल दिया जाए ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो एंड यू गाइस गेट ऑल थिंग्स on your tips. There is a paper series, those are coming ahead. MEG 4, 5, and then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये later on आएंगे. What are the first three papers? 1, 2, 3. सर वो क्वेश्चंस आए या नहीं आए जो मैंने मेंशन किए थे आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आकर लिखें जरूर कि सर वो क्वेश्चंस आए या नहीं आए. एंड देन वी हैव द सर्टेन आंसर, चीजें क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. यस, हियर आई एम हैविंग दीस क्वेश्चंस फॉर यू गाइस. Look, the first three paper 1, 2, 3, MG 1, 2 and 3. That's the British poetry, drama and then all. सारे के सारे क्वेश्चन वो थे जो मैंने यहाँ डिस्कस किए. तो यहाँ मैं फिर क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग लिए फॉर MG 06. तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करोगे, कितना टाइम लेना है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करूंगा. एंड देन यू नीड टू नो कि यार कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लाइव सेशन. टुडे सीरीज लाइव सेशन रहेगा जिसके अंदर चीजों को क्लियर करेंगे. तो जब आप MEG 06 की बात करते हो, अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हो, सबसे पहले आप परिटैनिज्म की बात करेंगे. यस, इट्स पुरिटैनिज्म और परिटैनिज्म डजंट मैटर कि आप क्या बोलते हो, कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है. तो इट्स पुरिटैनिज्म और कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आना है. I repeat, 100% this question be a part of your paper. So you guys need to clear. इसके लिए मैं पुरिटैनिज्म पे एक वीडियो बना रखी है गाइस, उसको जरूर देख लेना. हाँ, रिपीट जरूर देख लेना, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पुरिटैनिज्म है क्या, कैसे काम करता है. अलॉन्ग विथ वन मोर थिंग, सीरियसली अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हो, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. अभी क्या अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर करना ताकि बाकी लोग देख पाएं कि भाई ये क्वेश्चंस आने हैं. एंड देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सच एज लाइव सेशन जो डेली चलता है उसके लिए भी आप लोगों को पता लग जाएगा. चलो यार, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट प्लीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सर फर्स्ट वन, हाउ डिड द एमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग, I repeat, how did the emergence of trading interests undermine the unity within the Puritan settlement? I repeat the question, this is something very, very important. How did the emergence of trading interests undermine the unity within the Puritan settlements? वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. Second one, write a critical note on Puritanism. I repeat, write a critical note on the Puritanism as reflected in American literature. जो रिफ्लेक्ट होता है अमेरिकन लिटरेचर में वो हमें क्लियर होना चाहिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन, क्रिटिकली कमेंट ऑन परिटैनिज्म विद रेफरेंस टू अमेरिकन राइटिंग इन 19th century. ठीक है, तीन क्वेश्चन इनके बाद से कहीं क्वेश्चन नहीं आना. ये तीन क्वेश्चन अगर आपने ग्रिप कर लेना, क्वेश्चन कहीं से पास नहीं होगा. ये तीन आपको ऑन टिप होने चाहिए. जब नेक्स्ट वन, 100% क्वेश्चन का चांस होगा ब्लूएस्ट आई. आई रिपीट, ब्लूएस्ट आई. सर ये तो हमें आना चाहिए. टैनी मॉरिसन्स वर्क चीज़ों को क्लियर करना है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. इसका क्वेश्चन 100% पेपर में होता है. हाउ डू यू अकाउंट फॉर इकोलाज लो. आई रिपीट, हाउ डू यू अकाउंट फॉर इकोलाज लो सेल्फ स्टीम एंड हर क्वेस्ट फॉर ब्लू आइज. लो क्वेस्ट, दैट्स समथिंग नॉन सेल्फ स्टीम. कहीं ना कहीं थी, उसमें खुद में विश्वास था नहीं. उसे लगता है अगर उसकी ब्लू आइज हो जाए ना तो शी कैन बी अ बेटर ह्यूमन. यस, लोग उसको केयर करेंगे, लोग उसकी परवाह करना शुरू करेंगे. दे स्टार्ट लाइकिंग हर. ऐसा थॉट प्रोसेस था जो टॉनी मॉरिसन ने पूरी तरह पोर्ट्रेट किया. तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. कम ऑन नेक्स्ट वन, क्रिटिकली एग्जामिन द ब्लूएस्ट आई एज अ नॉवल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेंस. यस, इट इज व्हाइट डोमिनेंस. सर लेकिन व्हाइट डोमिनेंस में व्हाइट की कोई गलती नहीं थी. अगर प्ले को शुरू से देखूं तो उसका बाप गलत है यार. कुछ चीज़ों को डिफाइन कैसे किया गया, हाउ वी गाइस गोइंग टू एडजस्ट इट, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना था, उसको आपने फॉलो करना है. Critical examine the bluest eye as a novel of the protest against white dominance. Next one, which are the narrative strategies employed by the writer in the bluest eye? Narrative strategies. सर ये क्वेश्चन 100% पेपर में होगा किसी ना किसी फॉर्म में. Explain with example. Next one, the bluest eye is not merely the story of Piccola. Yeah, it is not a story of Piccola only. There are lots of other things. The Bluest Eye is not merely the story of Piccola, it deals with the entire community now to which Piccola belongs.
हाँ ये तो फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस. कहता है comment on Toni Morrison attitude to physical beauty with reference to novel The Bluest Eye. Physical beauty. Somehow the really eyes, the bluest eye, really do give a complete light over this physical beauty concept. I need to do the themes of this particular storyline, the bluest eye, along with the narrative technique. If I clear these two, I'll be able to write on each and every answer. This is what I want you guys to do. Jump next one. Huckleberry Finn. Sir, this is all about the short stories. Huckleberry Finn जिसमें expected है इस बार पेपर में. What is the significance of the river in Huckleberry Finn? Sir, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैं. I didn't go through this question. आपके नोट्स में है guys, don't worry. Next, the central concern of Huckleberry Finn is freedom and slavery. Discuss. Discuss the use of humor as a tool of social criticism in Huckleberry Finn. यहाँ कहीं ना कहीं है यार, उसको हाईलाइट किया. डिस्कस द यूज ऑफ ह्यूमर एज अ टूल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म इन हकलबेरी फैन. सिविल वॉर, क्या क्वेश्चन आ सकता है इस बार सिविल वॉर का? पुरिटैनिज्म नहीं आया तो सिविल वॉर आएगा, 100% आएगा. तो आई नीड टू क्लियर दिस कि यार पुरिटैनिज्म नहीं तो सिविल वॉर कंफर्म है मेरी, जो आना ही आना है. सो हियर आई हैव द क्वेश्चन, द नोटेबल चेंज इन अमेरिकन प्रोज. द नोटेबल चेंज इन अमेरिकन प्रोज अराउंड द सिविल वॉर come not in what was written about but in ways of writing. Yes, it do come in ways of writing. Next, comment on some of the shifts in the style and substance in American prose written after American Civil War as compared to the period before. या काफी सारी चीजों को क्लियर किया है, यहाँ पे मेंशन किया गया. Write a critical note on the prose of American Civil War. Prose of American Civil War. Now come to this question based on short stories and prose. से कोई कहानी नहीं, लेकिन हाँ उस कहानी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. जैसे कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ अमेरिकन ट्रांससेंडेंट. आई रिपीट, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ अमेरिकन ट्रांससेंडेंट प्रोज. चीजों में बदलना जो आ रहा है उस पे जो क्वेश्चन दिया गया वो है. डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोज राइटर्स यू हैव रीड. सर बदल गया क्वेश्चन, सीधे से प्रोज राइटर आ गया तो स्टोरी नहीं है, तो राइटर्स के बारे में, राइटर्स की राइटिंग होगी ना यार, तो यू नीड नो दिस. The 20th century short story primarily offers perception on human characters. Yes, we guys need to give an answer to this one. कहता है the 20th century short stories primarily offers perceptions on human characters. Discuss. Critically analyze the major concerns of Hemingway in the short stories. Yeah, I repeat the question. Critically analyze the major concerns of Hemingway in short stories. Come on, next question. This is one of the favorite short story of mine. A clean, well-lighted place. A clean, well-lighted place. Can I examine the theme of a clean, well-lighted place and a technique Hemingway employs to project this theme? उसने प्रोजेक्ट जो किया इसको, इस थीम को जो प्रोजेक्ट किया उसके लिए. How does a clean, well-lighted place explore Hemingway existential concern? उसने इन कंसर्न्स को डिफाइन किया तो हमें वो पता चाहिए. डिस्कस. Yes, we need to discuss this is concept को क्लियर करना. I hope that you are writing all these questions और ये ऑन टिप होने चाहिए आपको. बाद में मुझे बोलना कि सर हमने क्वेश्चंस नहीं कर पाए, आपने जो बोलते उसके बाद भी फिर पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको. Then one question from Death of a Salesman. This story somehow being a very realistic story. Yes, very realistic story. There's only one question on this one. That's the Death of Salesman, the tragedy of modern times. This is the reason I've told you this is a very realistic story. So comment Death of Salesman is a tragedy of modern times. The beer. Yes, the beer. Not very much expected, but yes, we guys have to do. Discuss the major concerns of the strategy employed in Hemingway in his short stories. Discuss with the theme that used by Faulkner in the beer. तो हमने यार ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. एंड देन द काम सीरीज जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर, द स्कारलेट लेटर. यू कैन नॉट लीव द स्कारलेट लेटर. तो आपको पहले के लिए स्कारलेट लेटर आपको ऑन टिप होना चाहिए. Critically comment on the significance of the three scaffold. I repeat, three scaffold scenes in the narrative of the Scarlet Letter. Next, discuss the Scarlet Letter as a romance novel. Yes, a romance novel. We can give an example with this. What does Hawthorne, I repeat, focus upon the criticizing in the Scarlet Letter? Last not the least. Bring out the importance of the minor character in the Scarlet Letter. How are they related to the major characters? Yes, how they are related to the major characters. So वो हमें clear होना चाहिए.
The hairy ape. The next one is the hairy ape. Analyze hairy ape as a expressionistic, I repeat, expressionistic comedy. सर एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते एक्सप्लेनेटिक बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि चीज़ों को क्लियर कर देती है. The hairy ape, analyze hairy ape as an expressionistic comedy. Next one. The hairy ape is about the predicament of the man in 20th century industrial civilization. I must say that is a slap on an Indian society. The society of industrialized society that was being depicted in the man, those who been ruling the basic part and how they're going to deal with it. उसको डिफाइन करता है. नाउ पोएट्री. नाउ आई विल कम द पोएट्री. काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पजल है सर इसमें आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आ गया तो हाउ गोइंग टू सर्वाइव. सर हमने तो पोएट्री को पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं पोएट्री इस पेपर की क्या है. सर टेक्स्ट तो हमें याद नहीं है. तो नीड नॉट टू वरी. आरटीसी के चांसेस 100 में से 2% है. 100 में से 2%. सॉरी टू से किस्मत बहुत खराब हो तो आरटीसी आ जाएगी, लेकिन 98% चांसेस है कन्फर्म ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे पोएट्री से. और वो भी लिख देता हूँ ये 8 क्वेश्चन, जस्ट 8 क्वेश्चन. आई एम टेलिंग दीज 8 क्वेश्चंस. इनके बाद एक भी नहीं आएगा. नोट इवन अ सिंगल वन. द फर्स्ट वन. हाउ इज द नेचर प्रेजेंटेड इन विटमैन पोएट्री? हाउ इज द नेचर प्रेजेंटेड इन विटमैन पोएट्री? फर्स्ट वन. सेकेंड. डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांसलेशन एंड द विटमैन्स पॉम्स. सर ट्रांसलेशन कैसे डिफाइन किया गया? ट्रांसलेटमेंट है हमारे पास, चीज़ को डिफाइन करता है. हाउ द थिंग्स बीन चेंजिंग. नेक्स्ट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन विटमैन पोएट्री. तो सर विटमैन देख लो कितना डोमिनेंट है. मुझे विटमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर करना है, उसकी पोएट्री की 2-4 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो आ गएगा. 8 में से 3 क्वेश्चन मैंने विटमैन के बोले हैं. नेक्स्ट. कहता है डू राउंड द 2 poems द रिच ऑन जेनिफर्स. आई रिपीट. डू द 2 poems बाय रिच. फर्स्ट ऑन जेनिफर डायगन स्नैपशॉट और डॉटर इन लॉ. दोनों कन्फेशनल पोएट्रीज हैं यार. हैव एवरीथिंग कॉमन. यस कन्फेशनल पोएट्रीज दोनों. हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थीम ऑफ द कंटेंट. दोनों पैट्रिकल सोसाइटी को डिफाइन करती है. मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसके कॉन्सेप्ट को बताती है. एक में रेबल करती है, एक में सरेंडर करती है. अब मैं आंसर इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा यार. नेक्स्ट वन. कहता व्हाट आर सिग्निफिकेंस फीचर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री. सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट माय फेवरेट वन. मैंडिंग वॉल बीचेस, इसको मत भूलना. आंसर द स्पेशल रेफरेंस मैंडिंग वॉल बीचेस. देखो मैंने बताया था कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको आना चाहिए. Now, कहता है how does Wallace Stephen juxtaposition image of the life of death in an emperor ice cream? How does Wallace Stephen juxtapose images of life and death in the emperor ice cream? Explain. Next one. Would you call Andrich Rich a feminist? Would you call Andrin Rich a feminist? I can say that. She was a feminist. Yes, she talks of women's rights and all the equality that she wanted in her life through her poetry. Look at that, Jennifer Tiger and my daughter-in-law. So next one. Break out the iron in the line, good fences make good neighbors. This is from The Mending Wall by Robert Frost. तो 3 पॉइंट डोमिनेंट है जो मैंने बोले यहाँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोला मैंने, एडमंड रिच बोली और विटमैन बोला. भाई उनके अलावा कौन सा पोएट डोमिनेंट था जो मैंने यहाँ मेंशन किया? वो तो कोई नहीं था सीरियसली. एक आपका पोएट है वॉल्स स्टीवंस जो आया एम्परर आइसक्रीम में. तो मैक्सिमम 4 पोइट्स. अब यह बोलना कि सर ये 4 भी करने मुश्किल है. कम नेक्स्ट वन. लास्ट नॉट द लीस्ट. 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सब्सटेंस हैं आपके लिए. पहला क्वेश्चन. डिस्कस द मेजर टेनेंट्स ऑफ अमेरिकन एनलाइटमेंट. टेनेंट्स. Discuss the major tenets of American Enlightenment. Now, what were the effects of life of literature? Critically discuss Indian contest. यार ये आ सकता है इंडियन लिखा हुआ है. Critically discuss the Indian context of American literature in 19th century and the last. Examine American milieu in which Arthur Miller emerged as dramatist. Arthur Miller as a dramatist की फॉर्म में आता है. उसको क्लियर करना. I hope you guys are going to clear this. ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे आपके पेपर में किसी न किसी फॉर्म में. तो डट कर जाओ गाइस. विश यू ऑल द बेस्ट.